friends, hi, welcome back to Achievers Academy, Gandhinagar. This is Karan Singh. Today we will be starting with the topic of science, that is physics. Okay, the section of science that is physics, and we will be starting with the chapter that is basically known as motion. So today we have completed, in the last few lectures, we have completed the maths first chapter. So we are starting here with the physics. Okay, so let's start with our class. So in today's, as we are having today's topic, okay, this is physics class 9, chapter number 8, motion. Okay, so in today's class, we are going to study about topics in the chapter that is basically the introduction, distance and displacement, uniform and non-uniform motion, speed, velocity, accelerated and deaccelerated motion, equation of motion, graphical representation of motion, uniform circular motion. These are the topics which we are going to study, okay, in this chapter. Fine. So let's start with today's topic. First, the introduction. Introduction, we are going to study that what is basically motion. Okay. So let's try to understand that what is motion first. Okay. So motion is defined as the change of position of an object with time with respect to its surrounding. Okay, with respect to its surrounding, motion is defined as the change of position of an object with respect to its surrounding. So what does that mean? Okay, for example, we say that any object is in motion. Suppose any object is in motion. So what can we say about the motion then? Then, for example, I'm asking you that you define me that what is motion. So आप क्या करोगे? आप कहोगे do anything that is moving is motion, right? But exactly it's not like that. Okay? What happens that if any object is moving with respect to a reference point and it is changing its position. So motion होने के लिए दो criteria सबसे बड़ी जरूरी है. पहला criteria, the object should change its position. सबसे important, the object should be changing its position. And second, there should be a reference point. Q. For example, in this statement only, we have written one example that a person, for example, we are sitting in a train, okay? We are sitting inside a train, okay? And inside the train, you see your fellow passenger. आप अपने fellow passenger को देखते हैं, तो आपको क्या दिखेगा? कि आप लोग rest पे हो, right? You will see that you are in rest. So what is rest? When an object is not changing its position with respect to the reference point. So हम एक बस में बैठे हैं, हमारे साथ एक पैसेंजर बैठा है, दोनों का पोजीशन क्या दिख रहा है हमको? रेस्ट. भले ही हमारी ट्रेन चल रही है या बस चल रही है तो हमको क्या लगेगा? हम दोनों रेस्ट पे है. बट जब हम बाहर देखेंगे, when we will see outside and we will see an object that is on rest, एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो रेस्ट पे है, तो हमको क्या पता चलेगा कि हम चल रहे हैं. तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए? अपोजिट मोमेंटम में होना चाहिए. लाइक अगर हम मूव कर रहे हैं तो रेस्ट होना चाहिए, वो रेस्ट पे है तो हम मूव करते हैं, ऐसा होना चाहिए. Clear? So what is motion? A motion of an object is said to be its change in position with respect to a reference point. एक starting point होना चाहिए. For example, एक हम बोलते हैं लैंडमार्क, जीरो लिखा है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं चलना, तो हम बता सकते हैं ना 100 गए, 200 गए, बट हमने स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मार्क किया, तो विल नॉट बी एबल टू जज कि हम कितना मोमेंट हमने किया. ओके, सो दिस इज मोशन. Okay, and here the example is given that the case of a train. Now, let's come to the definitions of the terms. Okay, so the first term which we need to think about is basically the rest. Okay, so what is rest? A body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point. With respect to a reference point, the position is not changing, then the object is said to be in rest. Then next, motion. We already discussed about motion. Here is the statement. I have written the statements for you people so that you can note down in your notebook. Motion. A body is said to be in a state of motion when its position change continuously with reference to a point. That is basically known as a motion. Okay. Now, there are types of motion. Okay. Types of motion depending upon the path on which they are traveling. Okay. अगर एक ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो उसके ऊपर उस मोशन का अलग अलग नाम हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन आप सबने सुना होगा. सर्कुलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन. जब भी आप सर्कुलर पाथ में मूव करते हो तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं?
circular motion. Okay, when the path of the motion is circular, then it is known as a circulatory motion. Second, linear motion. Linear means straight line. Okay, so whenever you are moving in a straight line, then it is known as a linear motion. Then third, oscillatory vibratory motion. अभी oscillatory and vibratory motion होता क्या है? What is oscillatory and vibratory motion? आपने देखा होगा पेंडुलम. पेंडुलम क्या करता है? ऑसिलेटरी मोशन करता है, मींस अपने मीन पोजीशन पे मूव करता है. इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. क्लियर? सो दिस आर द टाइप ऑफ मोशन डिपेंडिंग अपॉन द पाथ ऑफ द मोशन. क्लियर? अंडरस्टूड? फाइन. सो वी हैव अदर टर्मिनोलॉजीज ऑल्सो. अलग अलग तरह से बोलते हैं, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है लाइक जैसे ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, पीरियोडिक. ओके, ट्रांसलेटरी मतलब जब हम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं. ओके, वी कॉल इट एज अ ट्रांसलेटरी मोशन. फाइन. जब हम स्ट्रेट पाथ में, तो आप, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप किसी बुक में पढ़ो तो आप कंफ्यूज ना हो. ओके, द पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रांसलेटरी मोशन. रोटेशनल मोशन, ये तो क्लियर है नाम से ही, सर्कुलर मोशन कैन बी टर्म्ड एज द रोटेशनल मोशन. Then the periodic motion, the circular motion, the motion at a mean position is known as a periodic motion. Clear? Fine. So even यहाँ पे आप देखिए एक linear motion का example और diagrammatical view में present किया है. Okay. So this is known as the linear motion. Okay. Clear? Fine. Now we'll study about the physical quantity. What is physical quantity basically? Okay. We need to study about the term called physical quantity. So what is physical quantity? Let's try to read it out first. That physical quantity, any physical quantity is any physical property that can be expressed in numbers. For example, time is a physical quantity and it can be expressed in number. By anger, it cannot be expressed in number. For example, physical quantity, any measurable quantity is no, simple word में बोलूं तो कोई भी any measurable quantity is known as a physical quantity. हम किसी भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उस तरह की हम चीजों को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम, डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं तो हम कैसे कर बोलते हैं? वेट को 2 kgs, ग्राम्स में हम मेजर करते हैं. तो उस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. एनी मेजरेबल क्वांटिटी कैन बी टर्म्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एंगर है, वो क्या है? इमोशन. आप नहीं मेजर कर सकते तो वो हम क्या बोलते हैं उसको? इट इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी. हमारे पास दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर एंड वेक्टर. लेट्स सी दिस. ओके, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. वी आर हैविंग स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर quantity. Scalar quantity and vector quantity. Clear? So let's see the scalar quantity. What is the definition of scalar quantity here? It is a physical quantity having magnitude but no direction. It is a physical quantity having own magnitude but no direction. मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज है, वैल्यू. इट इज हैविंग सम वैल्यू बट नो डायरेक्शन. देयर इज नो डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से टाइम. अब टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है. क्यों? अब टाइम बताते हो किसी को ये नहीं बोलते कि नॉर्थ में 1 बज रहा है, साउथ में 2 बज रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं हम बोलते. सो इट इज अ स्केलर. टेम्परेचर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. टेम्परेचर भी कभी भी आप डायरेक्शन के पे डिपेंड नहीं करता. ओके, टेम्परेचर को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. क्लियर? फाइन. नाउ आफ्टर दैट वी आर हैविंग वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज अपोजिट ऑफ it is opposite of scalar quantity. Okay, so vector quantity, it is a physical quantity that requires both magnitude and direction. Okay, इसमें क्या चाहिए? It is a physical quantity that requires both magnitude and direction. Okay, इसमें magnitude भी चाहिए, मतलब वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, हमारा वेट कहां लगता है? ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ. ओके, तो वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल की तरफ. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. जिस भी क्वांटिटी में डायरेक्शन है हम उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? अंडरस्टूड? फाइन. सो दिस इज इट फॉर द टुडेज लेक्चर. होप यू हैव अंडरस्टूड द टर्म्स एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट फर्स्ट नोट दिस डाउन, ऑल द पॉइंट्स व्हाटएवर यू हैव इन द टुडेज लेक्चर. Clear? Thank you and have a nice day.